Ça va bien. Et tu t'appelles comment? What is Tu t'appelles comment? I don't what does that mean? What is your name? Je m'appelle Shreyas. Très bien. Donc, je m'appelle Harshvi Jain. Je suis votre professeur de français. I'm your French professor. Okay. Have you ever learned French earlier? Okay, so you know the basics? Yes, a bit. Like a bit. What do you mean by a bit? No. Can you tell me what all things you've learned earlier so that we learn something new today? Census. Tenses? Okay. So is it fine if we do amparfe today? Yes. I hope you will be having amparfe in this time. Yeah, so we'll do amparfe. Okay. So just give me a minute. I'll share my screen. Okay. Just give me a second. तू नहीं पढ़ेगा साले पाइथन सीखूंगा तेरा बाप भाई मैंने और रोहन ने ना अकाउंट्स क्लास ली यहाँ से गाँव मतलब के घर पे बैठ के पाइथन एक लैंग्वेज है स्कूल टाइम तक सीखी थी वो भी भूल गया अब तो चुप है तू काम कर तेरे से एक्टिवेशन हो नहीं रहा तो जरूर जाते क्यों नहीं है जाओ ना काम कर अपना काम कर एक्टिवेशन कराना मेरा काम है बार बार किनो एक्टिवेशन करवाने के लिए जा रहे हैं यार करने दो ना यार काम करने तो क्यों आगे परेशान अगर नहीं कर बात में Yeah, okay, you can turn your video on. I'm sharing my screen. Okay, tell me it's visible or not. इसे मैं निकालता हूँ इसे आज का काम इसे समान अभी तो मैंने बात कर दी अभी तो बोल देना अभी मैंने बोल दी ना जब तक आई Yeah, is my screen visible? C'est visible? टाइम लगता Yes. बोला लेकिन कॉल कब तक आएंगे Okay. So, on commence avec l'imparfait. L'imparfait is a tense, okay, which is used to describe the situation which happened in past. Okay, so l'imparfait is a tense which is in English as past continuous tense. Okay, l'imparfait is equivalent to a past continuous tense in English. Okay, now why do we use imparfait? What is so different about it? What is it different from passé composé? What is l'imparfait? Okay, why do we use it? So l'imparfait is used pour décrire une situation au passé. Okay, so we use l'imparfait to describe a situation which occurred in past. So, for example, quand j'étais petit, je joue avec mes amis tous les jours. Okay, so when I was small, I used to play with my friends every day. Okay, tous les jours, every day. Okay, so in this sentence, what am I explaining is that when I was small, I used to play with my friends every day. I'm not saying I am small now. I'm saying when I was small, when I was a child, I used to play a lot with my friends. So as you can see, in this sentence we have used imparfait because in this sentence we are describing the past. Like when I was small, I'm describing it. Okay, when I was small, I used to play with my